बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब वज़ीर दाखिला जनाब रहमान मलिक साहब, यू आर मोस्ट वेलकम। आप तशरीफ लाए। वज़ीर दाखिला एक इम्पॉर्टेंट विजिट पर आए हुए थे, तो उन्होंने मुनासिब समझा कि आप सब लोगों से भी मुखातिब हों और मिल लें, जो कि आपके मसाइल हैं उनका भी डिस्कशन कर लें, और जो मसाइल यहाँ इन्होंने गवर्नमेंट से उठाए हैं वो आपके सामने पेश कर दें। क्योंकि काफ़ी वक्त हो गया है, तो मैं डायरेक्ट अब रहमान मलिक साहब से कहूँगा, अर्ज करूँगा, आइए जनाब तशरीफ आइए आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। योर एक्सीलेंसी वाजिद भाई, सालस कैनी साहब, अजीज़ दोस्तों, बहनों, अस्सलाम वालेकुम। ये एक कस्टम रही हुई है कि जब भी कोई भी फेडरलिस्ट आता है तो कम से कम ज़रूर यहाँ आके आप लोगों को मिलता है, और मैंने अपना हमेशा ये प्रोग्राम रखा है कि जब भी आता हूँ मैं चाहता हूँ कि आपके साथ थोड़ी इंटरेक्शन हो, कुछ अपने दिल की बातें बताऊँ, कुछ आपके मसाइल सुनूँ। हो सकता है अगर 10 सुनूँ तो 4 या 6 हल हो जाएं, बाकी अगली नशिस्त पे आ जाएं। मेरी इस वक्त की विजिट जो थी वो बेसिकली जो इस वक्त हमारी कम्युनिटी को प्रॉब्लम फेस कर रही थी उसके लिए थी। और पहला पॉइंट जो था वो हमारे बच्चे जो यहाँ यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में आते हैं, लेकिन वो बोगस यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। तो कल इस मामले को मैंने उठाया था होम मिनिस्टर के साथ भी और इमिग्रेशन मिनिस्टर के साथ भी, और मैंने कहा कि इनका क्या कसूर है जब आपकी एम्बेसी ने उसको वीज़ा दे दिया, कंसिडरिंग दैट इट्स रजिस्टर्ड बोनाफाइड कॉलेज और यूनिवर्सिटी। तो देयरफॉर जो लोग भी उसका शिकार हुए हैं उनको एक ग्रेस पीरियड देना चाहिए, ताकि वो यहाँ पे दूसरे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकें और अपने कैरियर को परसू कर सकें। क्योंकि जो भी बच्चे यहाँ आते हैं, किसी का बाप अपना घर बेचता है, ज़मीन बेचता है या उधार लेता है, तो फिर बच्चों को यहाँ बेचता है। तो आई एम हैप्पी टू इन्फॉर्म यू कि दे विल कंसिडर इट पॉजिटिवली। 3 महीने तो इमीडिएटली हो जाएंगे, और 3 महीने में वो जो है अगर वो एडमिशन नहीं मिलती तो केस टू केस बेसिस पे वो जो भी बच्चा है, मैं अगर वो सुन रहा है टीवी पे या आपकी वसातत से, कि वो हाई कमिश्नर साहब को कांटेक्ट करें और वो जो ग्रेस पीरियड भी इंशाल्लाह उनको लेके दे देंगे। दूसरा, यहाँ पे मसला चला था कि जो लोग यहाँ पे आते हैं और वो शुरू में इस्टेब्लिश हो जाते हैं कि जो इलीगल आए हैं या उन्होंने पॉलिटिकल साइलम गलत सीखी है, तो वहाँ पे मैंने ये डिक्लाइन कर दिया था कि जब तक, आई एम रिपीटिंग द वर्ड, कि जब तक टोटल जुडिशल प्रोसेस जो है वो नहीं तय हो जाता और पूरी रेमेडीज जो हैं लीगल वो बंदा नहीं एग्जॉस्ट कर लेता, किसी को डिपोर्ट नहीं किया जाएगा। ये कैटेगोरिकल स्टेटमेंट। सेकंड, उसका दूसरा रुख ये है कि हमारे हज़ारों पाकिस्तानी इस वक्त जेलों में पड़े हुए हैं। वो नौकरी की तलाश में आए या फोर्स शादी पे आए या किसी न किसी तरीके से यहाँ पे पहुंचे, लेकिन वी कैन गो मोर देन $20 बिलियन। सिर्फ जो है आप जो पैसा है वो बजाय हवाले के 2-4 पैनी आप उस पर शक बर्दाश्त कर लें, सिर्फ अपने पाकिस्तान के लिए। आई टेल यू, हमें शायद किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, शायद IMF के पास भी ना जाना पड़े, क्योंकि जब आपके रिजर्व ज़्यादा होंगे, रेमिटेंस बैलेंस ऑफ पेमेंट आपकी जो है वो बेहतर हो जाएगी। लेकिन साथ ही साथ मैं ये कह दूं कि सख्ती हमने बहुत की हुई है, और जो भी हवाले से पैसा पकड़ा जा रहा है वी आर सीजिंग टू दी गवर्नमेंट, वो उस जो भेजने वाला उसको नहीं मिलेगा। तो मेरी रिक्वेस्ट होगी कि इसको एक किस्म की धमकी ना समझिएगा, दिस इज़ एन एक्शन and I don't want people to lose money. So therefore they must send their remittances, even $1000 है, 500 है, 200 है, through the proper channels. जो इस वक्त पाकिस्तान में आप सुनते हैं, आपको भी उतनी तकलीफ होती है कि आज एक धमाका हुआ है तो आपके लोग जो बाहर से इवन इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं वो भी नहीं जाते। It is all deliberate. It is all made out. And if there is any question, please, I'll be able to give you answer, but later. I'll give you a question session. I know my friends from media, let them have a little patience. There'll be 2 sessions. I'll speak few words. I'll not speak too much and bore you out, but let me give you the perspectives. Then you are
welcome to ask me any question you like. I'll be here till you tell me to go away. Now, coming back to the situation, जो कुछ हो रहा है और जो कुछ कराया जा रहा है, आप भी गांव के रहने वाले हैं. I was also born in a village in a middle class family. I know the जो पावर होती है, जो वक्त होती है एक मौलवी की, जितना वो कुछ कर सकते हैं वो भी आपके सामने है. आप मुझे बताएं कि पख्तूनख्वा हो या हो बलूचिस्तान हो, क्या हमारे मौलवी के पास इतनी कैपेबिलिटी है कि उसके पास रॉकेट लॉन्चर हो, उसको माइंस हों, एंटी एयरक्राफ्ट गन्स हों और बड़ी बड़ी 4 व्हील्स ड्राइव हों, बुलेट प्रूफ एंड बम प्रूफ? कोई तो है जो इसके पीछे है. वो कोई जो है उसके चेहरा हम जानते हैं, थोड़ा बहुत आवाम को भी पता चल गया. वी हैव एक्सपोज्ड, वी विल कंटिन्यू टू एक्सपोज, बट व्हाट वी नीड इज योर बैकिंग, योर यूनिटी. और यही चीज मैंने पाकिस्तान में भी हर जगह यही कही है कि लेट्स फॉरगेट आवर डिफरेंसेस, लेट्स राइज अबव द पॉलिटिकल गेन्स. और उससे थोड़ा सा एक जो कौमी यूनिटी है वो सामने नजर आनी चाहिए, क्योंकि आने वाले वक्त में देखता हूं कि पाकिस्तान में बहुत सारे वार होंगे. पाकिस्तान की इंटेग्रिटी जो खतरे में है. आई एम नॉट टॉकिंग लाइक अ पॉलिटिशियन कि शायद किसी की सिंपथीज विन करने के लिए कर रहा हूँ. मेरे पास जो मटीरियल रोज देखता हूँ, जो मैं इंटेलिजेंस रोज देखता हूँ, मैं उसकी बिना पे कह रहा हूँ कि पाकिस्तान जो है खतरे में है. और उसकी एक मिसाल आप बलूचिस्तान देख रहे हैं. देखिए, हमारे वतन अजीज में दुनिया की हर चीज़ है, कॉपर, गोल्ड, एनी मिनरल जिसे इट इज इन अबंडेंस. वह लोगों को अच्छा नहीं लग रहा कि पाकिस्तान ने अब उस तरफ तवज्जो दी है. और बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं पाकिस्तान में इन फॉर्म ऑफ मिनरल इज देयर. आवर गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू हैव इट एक्सप्लोर्ड. इंशाल्लाह वो एक्सप्लोर भी होंगे, लेकिन वहाँ हमें अमन चाहिए. और अमन जो आता है वो रिट से आता है, और रिट उस वक्त नहीं होती जब तक कि आपकी लॉ इन्फोर्समेंट जो है उसके पास वो कैपेबिलिटी कैपेसिटी ना हो. वी आर ब्रिंगिंग ऑल दैट कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी, and I assure you on behalf of my government that we will rather prefer to leave the government than being any harm to the people of Pakistan or the country, because if Pakistan is there, we are there. इसलिए ये जितनी इंट्रीग्स इस वक्त गवर्नमेंट के खिलाफ भी हो रही हैं वो बेसिकली इज पार्ट ऑफ डिस्टेबलाइजिंग पाकिस्तान. और मैं समझता हूँ कि हमारी लीडरशिप को भी, हमारे पाकिस्तान के हर शहरी को ये बिल्कुल ख्याल करना चाहिए व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इज पाकिस्तान. और पाकिस्तान की इंटीग्रिटी के लिए हर कुर्बानी देने के लिए हम लोग तैयार हैं. आई नो कि कल को ये भी हेडलाइन लगा देंगे कि रहमान मलिक कनार की हुकूमत छोड़ने के लिए तैयार है. ऐसी बात नहीं है. देयर इज ऑलवेज अ वे, देयर इज अ सिस्टम. और अगर इस वक्त दिए हुए टाइम पे जो कि मैंडेट दी हुई है पीपल ऑफ पाकिस्तान, उसकी अगर आप रिस्पेक्ट नहीं करते तो फिर ये सिलसिला चलता रहेगा और स्टेबिलिटी नहीं आएगी. जब तक मिडिल क्लास नहीं खड़ी होगी थ्रू दी प्रोसेस ऑफ इलेक्शन, उस वक्त मैं नहीं समझता कि मुल्क की वो तरक्की के तरफ ले जा सकते हैं, मसाइल का हल कर सकते हैं. इकॉनमी खराब, जो सर्कमस्टांसेस इन टर्म्स ऑफ जो लॉ एंड ऑर्डर है वो ठीक नहीं है. उसको सबको करने के लिए एवरीबडी हैज टू प्ले इट्स रोल. एंड आई एश्योर यू कि आपकी फौज, आपकी लॉ एनफोर्सर, they are doing lot of good work. They are doing beyond their capacity. Even today when I am talking here, our soldiers are fighting without any bulletproof jacket. They are in a bad circumstances, but quwwat imani, determination, they are keeping the flag of your country up, and therefore we got to give them support. और वो सपोर्ट सिर्फ और सिर्फ यूनिटी से आती है, बैकिंग से आती है. जब पूरा मुल्क मुत्तहद हो और वो बैक खुद देता है पूरी फोर्स के साथ, तो फौजी जो है लड़ता है, उसे पता है, लॉ एनफोर्सर को पता है कि मेरे पीछे बैक है मेरी नेशन की. तो आई एम श्योर यू ऑल आर एम्बेसडर्स हियर. वी नीड योर हेल्प, यू नीड योर लॉबिंग, बिकॉज इंटरनेशनल लेवल पे भी हमें ठीक ठाक सपोर्ट चाहिए. जो इस वक्त बलूचिस्तान में हुआ और बलूचिस्तान को आगे जो करने की कोशिशें की जा रही हैं, आपको पता है इसी शहर में जुलूस निकाले जाते हैं वो लोग जो अपने आप को नॉन पेट्रियाटिक, पता नहीं, वो कहते हैं कि हम बड़े वो नेशनलिस्ट्स हैं. दे शुड नॉट फॉरगेट कि आज भी उनकी रोजी, उनके बच्चे, उनकी फैमिलीज आज भी पाकिस्तान के नाम से रह रहे हैं, पाकिस्तान के नाम से खा रहे हैं, पाकिस्तान का पासपोर्ट इस्तेमाल कर रहे हैं. तो मैं ये समझता हूँ कि वो लोग जो इस वक्त
بھولے گئے ہیں یا بلائے گئے ہیں یا ان کو ورگلایا گیا ہے. I appeal them to be please get back to your Pakistan. پاکستان جو ہماری پہچان ہے, جو ایک ہمیں سورس آف اسٹرینتھ ہے آنے والی جنریشنز کے لیے. That is for us a strength and a future, and we have to save the future of our generation by working hard together. میں اس کے ساتھ ہی کہوں گا جو آپ کے ذہن میں کوئی کوشچن ہے آپ میں وہ زیادہ موقع دیتا ہوں تاکہ وہ ادھر سے شروع کر لیتے ہیں, ون بائی ون چلتے جاتے ہیں. جی ہاں جی, شہباز بھٹی صاحب کے لیے اگر آپ مجھے اجازت دیں 1 منٹ کی ہم خاموشی اختیار کر لیں. آپ کو مجھے محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے انٹروڈیوس کروایا تھا. ہم نے آنریبل ہائی کمشنر صاحب جو ہے ہم نے اکٹھا کام کیا. شہباز بھٹی صاحب کی کو جو دھمکیاں آنی شروع ہوئی وہ جب ربوہ اس میں کیس ہوا تھا گوجرا میں, اس کے بعد ہم نے ان کو بعد بھی جو اتنی سیکیورٹی ہوتی ہے منسٹر سے بڑھ کے دی. لیکن جب سلمان تاثیر صاحب کی شہادت ہوئی تو اس کے بعد جو ہے ان پہ خطرات کافی بڑھ گئے, اور اس پہ پریزیڈنٹ صاحب نے بھی خود انٹرسٹ لیا, پرائم منسٹر نے لیا, اور میں نے ان کے ساتھ خود بھی میٹنگ کی, اور ان کو ٹوٹل ہم نے 16 جو ایلیٹ فورس کے جو بیسٹ گارڈز ہوتے ہیں وہ دیے, اور 2 گاڑیاں, اور ایک تھی 1+4 پولیس کی, 1+5 کنسٹیبلری کی, اور 11 میں نے ان کے پاس وہ بھیجے کرسچن سپائی جو ہمارے ایلیٹ فورس کے تھے, 4 ان میں سے وہ رکھے انہوں نے. بھٹی صاحب کی 2 رہائش گاہیں تھیں, ایک وہ جو آفیشیل کم آفس کم ریزیڈنس تھی, اور وہاں سے 1.5 فرلانگ کے فاصلے پر ان کی ماما کا گھر تھا. تو وہ جب بھی آتے تھے آفس سے یا کہ سرکاری کام سے تو اپنی جو سرکاری رہائش گاہ میں وہاں چلے جاتے تھے. وہاں سے 11 ساڑھے 11 اپنا پرائیویٹ ڈرائیور جو شیئر تھا اس کے ساتھ اپنی والدہ گھر چلے جاتے تھے. اس دن بھی کوئی 11 بجے کے قریب وہ اپنے گھر میں تھے. باہر سے آنے کے بعد ان کے دوست آئے ہوئے تھے کینیڈا سے, ان کے ساتھ انٹرٹیٹ کرنے کے بعد وہی سی ڈرائیور کے ساتھ وہ اپنی ماما کے گھر چلے گئے. صبح جب وہاں سے ماما کے گھر سے نکلے تو ان کے پاس یہ اٹیک ہوا. اب یہ نہیں میں کہتا کہ انہوں نے بلنڈر کی یا غلطی کی, لیکن ان کے ذہن میں یہ تھا جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس گھر میں وہ رہتے تھے وہ نون ریزیڈنس تھی, یعنی آفیشیل ریزیڈنس تھی, تو ہو سکتا انہوں نے یہ سوچا ہو کہ میں اپنی ماما کے گھر محفوظ ہوں. میری جس دن ان کی یہ واقعہ ہوا ہے میں خود ان کے گھر گیا, میری ان کی سسٹر سے بھی بات ہوئی, والدہ سے بھی ہوئی, اور بھائیوں سے بھی بات ہوئی. دے آر ناٹ ریکارڈ, انہوں نے بتایا بھی ہے. والدہ کہتی کہ میں نے بہت دفعہ کہا بیٹی کو کہ بیٹی آپ نہ آیا کرو, اتنا جو 1.5 فرلانگ کا راستہ ہے یہ خطرناک ہو سکتا ہے, اپنی سیکورٹی لایا کرو. دوستوں کے بھی جو کہتے تھے تو وہ نہیں مانتے تھے, وہ کہتے تھے کہ کسی کو کیا ہے یہ ساتھ ہی تو ہے. وہ جو مس کیلکولیشن تھی اس ڈسٹینس کی کہ وہ اس میں محفوظ ہیں, اس وجہ سے. ویسے تو جس دن آنی ہے اللہ کے گھر پہ جانا ہے کوئی نہیں روک سکتا, لیکن یہ ہے کہ حفاظت کرنا جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جان کا, تو اس میں افسوس ہے ہمیں کہ اگر وہ ساتھ اپنی گارڈ رکھتے تو شاید یہ نہ ہوتا. اور اسی وجہ سے جتنے بھی منسٹرز, ایڈوائزرز اور جن کو بھی اس کا تھریٹ ہے, میں نے کہا کہ جو بھی سیکورٹی آپ کو دی گئی ہے اپنے ڈوروں پہ گاؤں میں مت چھوڑ کے آؤ, وہاں روپ ڈاؤن نہیں ہوگا بلکہ اپنی سیکورٹی کے لیے لگاؤ, اور مینڈیٹری کیا ہے. اور ظاہر اس واقعے سے ہمارا جو باہر جو ہماری ریپوٹیشن ہوئی ہے بہت خراب ہے. ظاہر ہے کرسچن کمیونٹی پاکستان کا حصہ ہیں, کانسٹیٹیوشن آف پاکستان پرووائڈز پروٹیکشن, اینڈ آئی ایشور مائی کرسچن برادرز اینڈ سسٹرز کہ جتنی بھی میکسیمم سیکورٹی ان کو ہے وہ دی جا رہی ہے. پولیس از انڈر انسٹرکشن, اور ہوپفلی انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ایسا واقعہ نہ ہو. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ واقعہ بھی جو شہباز بھٹی صاحب کا ہوا ہے یہ بھی ایک اٹیک آن ڈیموکریسی, دس از اٹیک آن دی پاکستان سے انٹیگریٹی, کیونکہ جہاں وہ سنی شیعہ کو لڑا رہے تھے, بریلوی اور دیوبندی کو لڑا رہے تھے, اس کے بعد انہوں نے پھر کرسچن کمیونٹی کو بھی اس کو کسی نے انکلوڈ کرنے کی کوشش کی. اس کا ثبوت یہ ہے کہ سیکنڈ ڈے پرائم منسٹر نے سارے جو ہمارے پادریز ہیں اور بشپس کو بلایا, اور ان میں سے بشپس نے اور پادریز نے یہ شکایت کی کہ ہمیں کچھ لوگوں نے کانٹیکٹ کیا کہ آپ سڑکوں پر نکلے. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ ہے. اور میں یہ بھی عرض کر رہا ہوں کہ جو آج بھی میں جب آ رہا تھا تو مجھے الرٹ ملا ہے کہ سم VIPs انڈر تھریٹ اینڈ سم تھنگ از ایمیننٹ ان لاہور اینڈ اسلام آباد. تو وہی میں عرض کر رہا ہوں کہ پہلے جب ویسٹرن بارڈرز پہ وہ جنگ تھی TTP کے ساتھ, ان کو ہم نے ایکشن بھی لیا, ان کو خلاف بھرپور کارروائی بھی کی.
अब दुश्मन ये समझता है कि एक्चुअली द एनिमी वांट्स टू यूज टेरर एज ए वेपन टू टेरराइज द पीपल। तो अब उसकी वजह से आप देखेंगे टारगेट किलिंग की तरफ आ गए हैं वो। कराची में देखें कितनी शुरू हुई। तो ये सारी चीज़ें एक बड़ी सोचे समझे मनसूबे के तहत हो रही हैं और बहुत से मनसूबे हमने एक्सपोज भी किए, उनके खिलाफ काउंटर एक्शन भी हो रहा है और आइंदा भी इंशाल्लाह गवर्नमेंट जो है सारे के सारे जितने भी हमारे पास जराए हैं ऑफिशियल वो सारे हम इस्तेमाल करेंगे, बिकॉज वी हैव टू सेव आवर कंट्री एंड आई श्योर यू कि दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट योर आर्मी, योर सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन and your law enforcement, your intelligences are working in one direction, and that one direction is Pakistan. That we all have to fight against the enemy, and we have to हर सूरत पाकिस्तान को बचाना है। तो इसलिए आपका भी रोल है इसमें कि आप अपनी जो है रेमिटेंसेस अपने नॉर्मल तरीके से भेजें और जहां भी मिलें पाकिस्तान के मौक़िफ़ को वाज़ेह करें। और ये अगर कोई समझता है कि क्रिश्चियन जो है उनके लिए कोई डिस्क्रिमिनेशन की जा रही है, ये हम नहीं कर रहे हैं, ये दुश्मन कर रहे हैं। और इसलिए कि जो भी वाक़या होता है उसमें ज़्यादातर मुसलमान मर रहे हैं। आपने देखा हमारे शहीद हो रहे हैं। जो हो रहा है बॉर्डर्स पे या अंदर जो धमाके हो रहे हैं आपके सामने हैं। धमाका फैसलाबाद में हो या वो इस्लामाबाद में हो, लाहौर, कराची, कोयटा, कहीं भी हो, ये धमाका पाकिस्तान पे है। इसलिए आपने देखा होगा मैंने कभी किसी को जब ऐसा होता है मैं जो बेसिक एड है, बेसिक लॉजिस्टिक्स है, इन्वेस्टिगेशन के टूल्स हैं, आई ऑलवेज गिव देम द हेल्प। मैंने कभी नहीं कहा तो मैं रिजाइन कर दो और मैंने अपनी पार्टी को भी मना किया ऐसी बात करने से, क्योंकि ये एक जंग है। इट्स नॉट द इशू ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, दिस इज लाइक अ मिनी इंसर्जेंसी। आप सिंध में भी देखें कि वो सड़कों में धमाके कराए जा रहे हैं, ये दुश्मनी करा सकता है ना। पाकिस्तानी तो कोई नहीं चाहता कि मेरा पाकिस्तानी भाई बहन कोई किसी को नुकसान पहुंचे या तकलीफ पहुंचे। जय जी, आप क्वेश्चन कर लीजिए, आपने इंट्रोड्यूस भी करवा दे ताकि सबको पता चल जाए। एक कर ले तो मेरा नहीं हो सकता। मैं ये पूछना चाहता हूँ, एक तो अभी आपने पैसे भिजवाने की बात की, हुंडी के जरिए नहीं भिजवाने चाहिए, बड़ी अच्छी बात है। इस हवाले से आपने पाकिस्तान में बड़ी बड़ी कुछ बिग फिशेस को भी पकड़ा है और पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छी आपने अभी 10 अरब या इससे जायद की बात की। इसमें जरा ये बता दें कि वो 10 अरब या उससे जायद या उससे कम जो पैसे अभी हुकूमत को मिल रहे हैं, मामूली या गैर मामूली कोई तब्दीली जो है उससे खुशहाली में बेटे नहीं। आप पहले इसकी मैकेनिक्स समझिए। जो पैसे आप भेज रहे हैं वो हुकूमत की जेब में नहीं जाते, वो तो अपने वालिद को या वालदा को भेज रहे हैं आप, ठीक है ना। तो वो आपके वालिद वालदा इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जो हमारी बुक्स में आ रहा है वो आ रहा है कि हमारे मुल्क में इतनी बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए इतना फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है, यानी कि जो फॉरेन एक्सचेंज जो है हमारी बुक्स में आ जाता है। इकानमी में बेहतर आती है, बहुत बेहतरी आई। अगर आप 10 अरब और भेज दें हमें जरूरत नहीं पड़ेगी IMF से कर्जा लेने के लिए। आई एम जस्ट सेइंग लेट्स हैव अ फर्म रिजॉल्व दैट वी हैव टू गेट आउट ऑफ द क्लचेस ऑफ वर्ल्ड बैंक एंड IMF। सेंड योर मनी regularly for 1 year. I assure you that we will not be needing anybody's help. दहशतगर्दी के वाले से भी आपने बात की कि आपको पता है कि बलोचिस्तान में बड़ी बड़ी गाड़ियां वगैरह भी आपने खुद ही कहा कि नहीं गाड़ियां, और आपको पता है कि कौन है। तो क्या आप यहाँ पर बरतानिया और अमेरिका में बात करते हैं, क्या बरतानिया अमेरिका को नहीं पता कि ये जदीद तरीन गाड़ियां और असलहा जो है कहाँ से? मैंने ये तो नहीं कहा बरतानिया अमेरिका दे रहा, मैंने तो आपका दुश्मन की बात की है मैंने। जी बात नहीं हो तो मेरी हाई कमिश्नर साहब, बिल्कुल हाई कमिश्नर साहब भी गवाह हैं, यहाँ नहीं बल्कि व्हाइट हाउस में बैठ के मैंने कहा, मैंने बिल्कुल हर फोरम पे कहा है कि अमेरिका से जो आपके सैटेलाइट हैं, यू कैन पिक अ नीडल फ्रॉम द ग्राउंड, व्हाई कांट दे सी क्रॉसिंग ऑफ दीज टेररिस्ट अलोंग विद गन्स एंड ऑल दैट। तो मैं यस करूँ ये हर जगह हम दे रहे हैं और फिर जो आते हैं हम एक्शन भी ले रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप देखें कितनी बेहतरी आई है। अब बलूचिस्तान में कोई दिन खाली नहीं होता था जहां पे धमाके नहीं होते थे या पकड़ दकड़ नहीं होती थी या मारे नहीं जाते थे। बिल्कुल 3 डिस्ट्रिक्ट रह गए हैं जिसमें ये इंसर्जेंसी है, उसमें भी हम एक्शन ले रहे हैं इंशाल्लाह। ये असल में जो कुछ हो रहा है, आप जब अफगान और सोवियत यूनियन की जंग हुई थी उसी वक्त का ये शुरू हुआ और वो फिर चलता आया। क्लैश एंड कोफ कल्चर कहाँ से आया आपके पास, कहाँ से आपके ये जो टोटल जो है ड्रग बैलेंस कहाँ से? आज ही $5 बिलियन का ट्रेड हो रहा है अफगान और पाकिस्तानी बॉर्डर के ऊपर, और जाहिर है पाकिस्तानी भी इससे सफर कर रहे हैं। तो ये एक कंबाइंड एफर्ट है, इसलिए मैंने अर्ज किया ना कि यूनिटी बहुत जरूरी है हमारे अंदर।
اور اس یونٹی کے ساتھ ول بی ایبل ٹو فائٹ اٹ آؤٹ. آج ذرا کمیونٹی کر لے تو اچھی نہیں بات. میں ایک منٹ میں وعدہ کرتا ہوں. ایک منٹ تشریف رکھیں, ایک منٹ میں جس طرح تشریف رکھیں. آج مجھے اگر موقع دیں مجھے بھائیوں سے جو میرے دوست آئے ان سے ملوں, پھر میں آپ کے ساتھ بعد میں بات کر لوں. چلو کر لیں جی, کر لیں. میں ڈار صاحب نے فیصلہ کرنا, کون روک سکتا ہے. چلیے جی بولیے. بالکل آئیے میں دیتا ہوں جواب آپ کو. اب جواب ہونے سے پہلے میں چلا گیا. کوئی بات نہیں کرنا جی, پلیز ویلکم. جی پہلا سوال یہ ہے کہ جو آج سندھ میں ہڑتال کی کال دی گئی ہے پیپلز پارٹی سندھ کی جانب سے, وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف دی گئی. کیا یہ ایک درست اقدام ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلے کو سیاسی اس میں لانا؟ یہ ایک سوال. سیکنڈ سوال اس کمیونٹی کا ہے کہ 6 سے 7 لاکھ جو پاکستانی ہیں, برٹش پاکستانی, اور نارتھ میں ابھی تک مشین ریڈیبل پاسپورٹ نہیں بنا. اس کی کئی شکایات ہمیں جان میں موصول ہوئی ہیں, اور میری اطلاع کے مطابق مانچسٹر میں مشین ریڈیبل جو ٹیکنالوجی ہے وہ پڑی ہوئی ہے, اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ وہاں پہ کوئی جگہ نہیں ہے کہ جہاں پہ اس کو فٹ کر کے وہ مشین. ٹھیک ہے, دونوں کوشچن. آپ اس حوالے سے. بالکل, تھینک یو. سیکنڈ کوشچن از گڈ, از فار دی کمیونٹی. انفیکٹ میں نے پہلے ہی اس کا سدباب کیا ہوا ہے. تقریباً 7 آؤٹ لیٹس ہم کھول رہے ہیں, اور میں اگر اجازت دے دیں آپ نے بات کر لی تھوڑی سی. I'll be grateful if you give me the chance to speak. Let me handle it. Please آپ بیٹھ سے بیٹھ سے. میں روز اپنے دوستوں سے بات چیت کرتا رہتا ہوں, انشاءاللہ ڈونٹ وری I'll respond. بات یہ ہے کہ اگر میں صرف نادرا کا دفتر کھول دوں اور پاسپورٹ کا نہ کھولوں تو زیادتی ہوگی. تو جہاں میں نادرا کا کھولوں گا وہاں پاسپورٹ آفس بھی ہوگا, تو ان کو میں نے کمبائن کر دیا. اگلے 8 ویکس میں یو ول فائنڈ دس آفس ان اسکاٹ لینڈ. آپ جو جگہ بھی جو بھی شہر کہتے ہیں اسکاٹ لینڈ میں وہاں کھول دیتا ہوں آپ کو, ٹھیک ہے, آپ چوز کر لیجیے گا. دوسرا, باقی آپ نے کیا سیاسی سوال جو ہے, فار دا لاسٹ 3 days آئی مین UK, آئی ریئلی ڈو ناٹ نو کہ کیا اسٹیٹمنٹ آئی, لیکن جو میرا نالج ہے وہ احتجاج کیا تھا. احتجاج جیسے آپ بھی کر لیتے ہیں کبھی کبھی پلے کارڈ اٹھا کے, ہر ایک کا حق ہے, اس کو میرا حال کوئی زیادہ نہیں بات ہونی چاہیے. نہ ہڑتال کی کسی نے کال دی, نہ کوئی اسٹرائک کی کال دی, سو دیئرفور ایسی نہیں بات. بس لیٹس سے جی. میرا نام شراز خان ہے جی. میں ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں جو ہم سب سے متعلق ہے. ہمارے بہت سارے لوگ یہاں سے پاکستان جب جاتے ہیں, آج کل اسلام آباد یا کراچی کے اندر خاص کر یہ ہو رہا ہے کہ ان کو فالو کیا جاتا ہے اور راستے میں ان کو لوٹ لیا جاتا ہے, یا جب وہ گھر جاتے ہیں تو انہیں جو ہے وہ لوٹ لیا جاتا ہے. اس بارے میں آپ کی حکومت. میں نے یہ شکایت مجھے وہاں بھی آئی. گجرہاں کے صرف میں 2 واقعات عرض کرتا ہوں کہ مہمان آئے, ان کو رستے میں روکا گیا, تو جب پکڑے گئے تو ان کے اپنے رشتہ داروں نے کیا یہ. تو ہم سوری, اس میں کچھ گھر کے بیدی بھی ہوتے ہیں, لیکن میں یہ کرتا ہوں کہ خاص طور پہ جو روڈز ہیں مین, اس میں پیٹرولنگ بڑھوا دوں گا. یہ زیادہ تر واقعہ ہمیں آئے ہیں گجرہاں کے علاقے میں, یہ اپ ٹو جیلم. ہاں میں آ رہا ہوں اس کی طرف. کشمیر کی طرف بھی ہے. یہ ایئرپورٹ سے سیکیورٹی لیک ہوتی ہے جو ان کو فالو کرتے ہیں. دیکھو نا, آپ چلے, میں بتاتا ہوں, میں تھوڑی سی عرض کر رہا ہوں کہ میں نے آپ کو 2 کیسز کا بتایا کہ آپ نے رشتہ دار ان کے پکڑے ہم نے, ٹھیک ہے. یہ بڑی ایک انفارچونیٹ چیز ہے اور اس کا ہم کو رستہ نکالیں گے, لیکن یہ ہے کہ آپ اپنی وزٹ جو ہے سیکرٹ رکھیں. اور اس کا میں ایک حال دوسرا نکال رہا ہوں کہ کوئی جو ٹیکسی کی ایلیٹ ہے وہ ہم کوئی ایسی رکھیں جس میں کوئی گارڈ کی پروویژن ہو. تو اگر کوئی بندہ, میرے ذہن میں بھی یہ خیال ہے وچ آئی ووڈ لائک ٹو امپلیمنٹ, کہ وہاں ٹیکسی سروس رکھ دیں. اگر کوئی ٹیکسی لیتا ہے تو اس کی ڈیٹیل, جیسے یہاں پہ بھی جو جہاں جن ملکوں میں حالات ٹھیک نہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ ٹیکسی پہ اس کی ڈیٹیل لے لیتے ہیں اور آن دی ادر اینڈ جا کے وہ پوچھ لیتے ہیں. تو میں بھائی آن آل دی ایئرپورٹس وی گیو دس ڈیوٹی ٹو اے سرٹن کمپنی which has got some security training also, تاکہ آپ کو وہاں گھر تک صحیح تک پہنچایا جا سکے. اور میرا حال یہ بھی کر لیتے ہیں کہ اسی پرائیویٹ جو کمپنیز ہیں گارڈز کی,
उनको भी हम कोई थोड़ा हो सकता है उनको काउंटर लगा लें. अगर किसी को समझता है कि उसको खतरा है और कोई इतनी वैल्यूएबल चीज़ ले जा रहा है तो उसको वहाँ एयरपोर्ट पे उसके घर तक सर्विस मिल सके. मैं नेक्स्ट मेरी मीटिंग जब होगी एविएशन वालों के साथ और ESR के साथ, आई विल वर्क आउट ए वे फॉरवर्ड. जी, यू डिसाइड. चलो बड़े हैं यार, इज्जत कर लो. जी सर. I'm happy that you sound, I won't say over-optimistic. As a nationalist, I'm Amanullah Khan. I know you, sir, very well. Everybody knows you here. MashaAllah. I'm glad that the Interior Minister of the Islamic Republic of Pakistan sounds positive, sounds optimistic. I won't say over-optimistic. That would be misleading of the reality of the situation. But I congratulate him on his breakthrough. If it is a breakthrough, he says, and the nation is ready to cooperate with the government, with the opposition, with the people of Pakistan, with the government of Pakistan, that we are ready to act as an alternative to IMF and to the World Bank. Very good, very good, very good. And if you command, I can spearhead a campaign in that direction, because all these problems are coming from the person, the guy who says, oh man, I'm giving you money and I give you money, so you play music according to my taste. We refuse to play that music which is against the national taste. Very good. And I hope that your taste will come. एक मिनट, let me get. My question is that kindly, do you have in mind a marathon national campaign with full national spirit, so that all Pakistanis, all over EU, America, they can send money through the bank, through a regular system, so that these words that don't die on the rock front, they become a reality. Thank you. And Can I? Do you have a program of setting up a desk in every embassy, in every consulate to do this, you know? Okay. Let me. That's my question. इन्होंने एक मैं बात कर, मैं इनको कमेंट दे दूँ. सबसे पहले अमानुल्लाह साहब, I really express my deep gratitude to you for the feelings you have expressed. Yes, everybody has to be optimistic. Even your religions tell you कि मायूसी गुनाह है. और अगर आपको मायूसी लीडरशिप के लेवल पर नजर आए तो कौमें मुरझा जाती हैं. और यकीन करें जो भी मैं कह रहा हूं यहाँ पे, आई एम सेइंग विद फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड विद फुल ट्रांसपेरेंसी whatever I'm saying. I am from a middle class. I know the problems of middle class. I have lived in Israel for 9 years. I know the issues, sir. Now coming on, how to do it? Well, campaign is another way. But you have a big guideline. That is your legal system. Allah does not permit hawala. So why don't you become a citizen, law-abiding citizen? We don't accept hawala. Number one. Now, hawala has been condemned. You start a campaign, hell with hawala. Okay, now, And long live okay, Pakistan. I request you to accept the responsibility up to UK, and I will give you the full support. And when I go back to Pakistan, I will talk to the finance minister. You have a very valid, doable suggestion, and I think let's have committees in every country, because every Pakistani wants betterment of Pakistan. तो इसके लिए मैं कैंपेन करवाता हूँ थ्रू दी वेलफेयर अटैचीज, और आप जैसे जो एक्टिविस्ट हैं, those who can move the people, will request them. नंबर 2 campaign ना हो, पाकिस्तान को माला माल करें. आपको हम नंबर 1 कर देते हैं ना इसमें, and let's make this first campaign in UK with your guidance, okay? And I'll have a separate meeting with you. Yes sir. मेरा क्वेश्चन आपसे जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दें ताकि माय नेम इज मोहम्मद अली एंड आई एम एन ओवरसीज पाकिस्तान. हम लोग यहाँ पे जब डे टू डे लाइफ में लोगों से मिलते हैं तो वो हम लोगों से एक क्वेश्चन करते हैं. वो ये क्वेश्चन है मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत के बारे में. वो हमसे कहते हैं कि जी 3.5 साल हो गए हैं उनकी शहादत को, और अभी तक आप बैठिए, मैं आपको जवाब देता हूँ. हाँ, मुझे पता नहीं. अच्छा, प्लीज सुन लें तो फिर मैं रहना बैठ जाऊंगा. मेरा सवाल जो है वो आपसे ये है सर
کہ 3 سال گزرنے کے بعد آپ کی گورنمنٹ کو بھی یاد آیا ہے کہ پرویز مشرف صاحب جو ہیں ان کے مرڈر میں انوالو ہیں اور which is I think it's a political victimization. اور آپ پاکستان کی گورنمنٹس نے, میں آپ کی بات نہیں کر رہا, آپ کی حکومت کی بات نہیں کر رہا, میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں. پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے وہ آلویز وہاں پہ رہتی ہے, حکومتیں لوگ بدلتے رہتے ہیں, لیکن پاکستان جیسے آپ نے کہا کہ ویسے رہنا چاہیے. پاکستان کے اندر 2 انویسٹیگیشن ہوئی ہیں بینظیر بھٹو صاحبہ کے مرڈر کیس کے بارے میں. ایک جو ہے وہ let him speak out, please. Let him speak out. ایک جو ہے انویسٹیگیشن وہ اسکاٹ لینڈ یارڈ نے کی ہے, اور دوسری آپ کی گورنمنٹ کی ریکویسٹ کے اوپر یونائیٹڈ نیشن نے کی. ان دونوں انویسٹیگیشن میں پرویز مشرف صاحب کو ایلیمینیٹ کیا, ان دونوں انویسٹیگیشن. اللہ میاں کو زندگی دے, he is not eliminated. No, he was eliminated. ٹھیک ہے. No, you can say that he was exonerated or he was grey. ان کو ایلیمینیٹ کیا ان کو. اچھا جی, آپ ذرا اس کے لیے میں دیکھیں بات سنیں, یہ ایک میری بات سنیں, میں آپ کو جواب دیتا ہوں. I have understood you. Please excuse me. آپ میں جواب دے دوں آپ کو. دیکھیے بات سنیں, ایک تو آپ فیکچوئل چیز کو دیکھیں. انویسٹیگیشنز 2 نہیں ہوئی, انویسٹیگیشن 4 ہوئی ہیں. جو انویسٹیگیشن, اگر آپ مجھے اگر اجازت دیں تو آپ نے کوئی سوال کر لیا, اٹس مائی رائٹ ٹو آنسر یو, بیکاز یو ہیو. جی میں آپ کے سوال کا جو نہیں بھی کام ہے اس کا بھی جواب دینے لگا ہوں. آئی ہوپ یو ول بی سیٹسفائڈ وین آئی ٹیل یو, اینڈ آئی ول سے ود ٹرانسپیرنسی اینڈ آف کورس ود ریسپانسبلٹی ٹاکنگ ٹو دی انٹرنیشنل میڈیا. نمبر 1, ایک منٹ میں ایک کو جواب دے سکتا ہوں. Please, let's not give me. I've got only 2 years and 1 tongue, and I can answer at one time, sir. Please. I know you are Muslim, but let me answer it, please. And then I'll take your question on your time. دیکھیے, جب محترمہ کی شہادت ہوئی تھی اس وقت گورنمنٹ اور تھی, ٹھیک ہے, اور پنڈی کی پولیس نے اور لاہور کے افسر نے اس کو انویسٹیگیٹ کیا تھا. انہوں نے کچھ بندوں کو اریسٹ کیا تھا, ٹھیک ہے. پھر ہماری گورنمنٹ آ گئی اور ہم نے کہا کہ ٹرانسپیرنٹ چیز ہونی چاہیے, کہیں وکٹمائزیشن نظر نہیں آنی چاہیے. اور جب محترمہ حیات تھیں, ان کو جب 18 اکتوبر والا واقعہ ہوا تھا تو انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی کہ ہم جو ہے انویسٹیگیشن یونائٹڈ نیشن سے کرانا چاہتے ہیں. ہم نے انہی کے خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے اس وقت کی گورنمنٹ کو لکھا کہ ہم انویسٹیگیشن یونائٹڈ نیشن سے کرانا چاہتے ہیں. That remained in negotiation while we took over the government. اس وقت پھر ہم نے یہ جو انویسٹیگیشن کی ریکویسٹ کی, فیکٹ فائنڈنگ کی, ناٹ فیکٹ فائنڈنگ کی, اور اس کا لفظ انویسٹیگیشن کا نکال دینا چاہیے کہ جو ان کو اس وقت ٹرمز آف ریفرنس بھی دی تھی وہ فیکٹ فائنڈنگ کی تھی, ٹھیک ہے. پھر ایک GIT ہیڈڈ بائی اے ویری ویری آنیسٹ آفیسر, اس کو لگایا گیا. اب جہاں تک تعلق ہے کہ ہم نے وکٹمائزیشن کی, یہ ایک پبلک ڈاکومنٹ ہے, اور لیٹ می ٹیل یو ٹوڈے کہ ہم نے اس کی انویسٹیگیشن اپورڈ اینڈ ڈاؤنورڈ دونوں کی. اور میں یہ عرض کر دوں کہ ہم نے یہاں تک بھی آئیڈینٹیفائی کیا کہ کون کنسپریٹر تھے, کون ابیٹر تھے, سوسائڈ جیکٹ کہاں سے آئی, وہ کس گھر میں جا کے رکھی گئی, پھر وہ کن گاڑیوں پہ گئے, اور وہاں سے آنے کے بعد پنڈی کے قریب اور پشاور کے درمیان ایک ایسی جگہ جو استعمال ہوئی, اور محترمہ پہ ٹوٹل جو واقعات تھے ایسے وار 4 ہوئے. میں پلیز لیٹ می فنش. لک آئی ایم ناٹ ان, لیٹ می ڈسکس پلیز let me finish it, because I'm here to answer you what you have said it. What am I? Well, no, I'm not. You don't. I tell you the whole thing. Now, a complete challan has been submitted. During the investigation, I'm using the word during the investigation, there were certain statements of the individuals, of the officers, regarding certain questions. And those questions were very pertinent. Like, a meeting was called with a certain number of officers, and a person concerned sitting there tells that please say these words, say this press conference. It has not been done by Rahman Malik or anybody.
This investigation has been carried out by an investigating team which is headed by the most intelligent, honest, a person with integrity. So whatever the evidence was available, statements were available, they were placed before the court. It's not the government of Pakistan who's asking for it. Going through the evidence, the court decided to issue the first bailable warrants and then non-bailable warrants. And if you recall, the IOs tried to serve a questionnaire to Mr. Ex-President General Pervez Musharraf, and he is on public that he is not interested to answer the questions. Now, when it has come, he is being given a chance to explain all whatever is in the record. And by the way, please ask your friend and take a copy of Challan. And after reading through it, you don't have in Pakistani somebody who can apply there and get the copy of the Challan? All right. So when time comes, and I think during the trial, when the time comes and the court allows us to make the Challan public, I'll do it. But I tell you that we will be the last person to victimize anybody, because we have taken the taste of victimization. Next, please. I'm not here for discussion. Next. बाद में मुझसे मीटिंग कर ले, मैं बात कर लेता हूँ. बात. Next. मैं बाद में मिल लेता हूँ ना आपसे. बाद में मिल लेता हूँ. Next. उधर से आ रहे. बस ठीक है. Last and this side. मैं आपसे बाद में मिल लेता हूँ. आपको सेटिस्फाई करके जाऊँगा. No problem. I would like to have some discussion. I thought this was a community event and let us... Okay, right, last question. It has become a press conference, but let them give a chance. I'm sitting here for you. Come on. अच्छा एक देख ले फिर पढ़ लेते हैं. जी. सर आप लोग का वो अपने काउंटर पार्ट्स की मीटिंग हुई, उसमें क्या परवेज मुशर्रफ के खिलाफ अरेस्ट वारंट है क्या, उस हवाले से आप लोगों को पता है? दूसरा आपकी जो कन्वर्सेशन हुई उसमें क्या आपने उनसे कोई एश्योरेंस मांगी है, कोई रेमंड डेविस टाइप या CIA टाइप कोविड ऑपरेशन में ब्रिटेन इन्वॉल्व नहीं है, और लियारी अहमद कमेटी के बारे में आपने क्या? देखिए जी, आपने 4 क्वेश्चन पूरी थीसिस कर दी. Number 1, we are a sovereign state and we do not like this question from any country. And I assure you, nobody dare to ask me anything about Raymond Davis. We will decide. Number 2, let me finish it. यार ये कोई बहस तो नहीं है, मैं क्वेश्चन का जवाब आपको दे रहा हूँ, please. Second question, as far as other issue is concerned regarding all the matters which you have mentioned, nothing of that sort where even name of General Pervez Musharraf figured out, because this is a arrest warrant which is issued by the court, and they have used the via media Foreign Office and the embassy. So please rest assure you, and I tell you, there's nothing of the sort. If we were weak, we would have put Raymond Davis in the plane and sent. Please encourage your government, give a pat to your government that we stand for the interest of Pakistan. बाकी लिहारी यार देखिए, लोकल पॉलिटिक्स होती रहती है. आपके जियो के अंदर पॉलिटिक्स होती है, मेरे दफ्तर में पॉलिटिक्स होती है, एम्बेसी में पॉलिटिक्स होती है. तो अगर लियारी की भी पॉलिटिक्स हो रही तो फॉरगेट इट, लेट देम सॉर्ट इट आउट. हाँ मेरी बहन, आप बोलिए. मेरा नाम सितारा अंजुम है और मैं काउंसलर हूँ. तो मैं पाकिस्तान की कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करती हूँ. बहुत से लोग ये सवाल पूछते हैं और आजकल ये बर्निंग इशू है. अभी इन्होंने जिक्र किया रेमंड डेविस का. तो रेमंड डेविस के हवाले से पाकिस्तान की जो अवाम है उसमें शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है इस पर, और उनके अंदर ये तासुर है कि जो हुकूमत है वो अमरीकी दबाव में आकर रेमंड को किसी तरह से इस्तेस्ना करार देने की कोशिश कर रही है. रेमंड के पास से जो दस्तावेज़ात इस वक्त बरामद हुए हैं उससे उसका ताल्लुक CIA और ब्लैक बॉर्डर जैसी खतरनाक तंजीमों से साबित होता है. तो सवाल ये है कि क्या हुकूमत पाकिस्तान ने... आप अच्छा उर्दू पढ़ लेती है माशाल्लाह. जी, क्या हुकूमत पाकिस्तान ने अमेरिका से इसकी कोई वजाहत आज तक तलब की है? और दूसरी चीज है कि अमेरिका जो पाकिस्तान को डूम और के कहकर जो अंडर प्रेशर उसको लाता है, तो क्या किसी ने उनसे ये पूछा है कि उनकी खुद की तंजीमें पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी में जो इस वक्त मुलव्वस है, तो उसका क्या जवाब है उनके पास? और अगर किसी तरीके से पाकिस्तान की गवर्नमेंट रेमंड डेविस को कोई भी सजा दिए बगैर छोड़ देती है, तो क्या 17 करोड़ अवाम का गम और गुस्सा बर्दाश्त करने की इस वक्त पोजीशन है हुकूमत की? मेरी बहन, my emotions are almost what you say. जो गवर्नमेंट या स्टेट
अपने लोगों को इमोशन को नहीं समझती, उसको राइट नहीं होता हुकूमत करने का। ठीक है, अभी तक जो आपके सामने आया, हमने अच्छी बातें कर रहे हैं आप, हमने अपना सर नहीं झुकाया, हमने सर नहीं झुकाया और ना ही हम झुकाएंगे। अगर ये सर झुकाने वाली बात होती तो हमें 4 लाइनें लिखनी थी सिर्फ कि David Ram is hereby given the diplomatic immunity. That has not been done. And our courts are sovereign. They are independent. We have left the decision to them. And I assure you that we'll follow what our courts say, number 1. Number 2, मफरूज़ों पे बात नहीं होनी चाहिए। अब मुझे उन लोगों से पूछता हूँ आपकी वसातत से कि कुछ पार्टियां इस वक्त भी वहां पे हड़तालें कराती हैं, मुतवक्को रिहाई के खिलाफ हड़ताल। Of God's sake, first see what's going to happen. We haven't said that he's going to be released. The only thing what we have said is that we will follow what the court says, and the court has taken the onus on it. As far as its investigation is concerned, that is there. The matter is sub judice in the court of law. Either we start trusting our courts or we start talking ourselves. And young lady, I would like to advise you that let's learn. You also, you are a community councillor, and you also do a favor to us too. Let's wait for the judgment of the court, because that's the way forward. That's the way forward. मैं बात से मिलूंगा, please, please have a seat. Have a seat. आप पीछे आ जाइए। एक 2 में से एक फैसला करें, एक काउंसलर है, एक वो। I will not leave, my dear sir, unless I tend all of you. अच्छा, sorry. चलो जी। देखिए, बात सुने, आपको मेरे भाई मैंने चांस दिया, मैं आपके साथ बाहर बैठ जाऊंगा। आपको अगर आप ना बनाना चाहते हैं तो अलग बात है, लेकिन मैं बैठ के एक्सप्लेन कर दूंगा। एंड इफ नीड बी, आप मुझे ईमेल दें, मैं पूरी डिटेल्स भी भेज दूंगा और एक अफसर भी आपके पास भेज दूंगा एक्सप्लेन करने के लिए। गिव द चांस। जी साकिब साहब, यार साकिब साहब को चांस दें। आई नो यू लुकिंग वेरी स्मार्ट, बट लेट हिम से। हाँ जी, representing the ambassadors of Pakistan in this country. जो सवाल आपसे मैं पूछे, 2 सवाल पूछना, तो एक आपने जो आज बात की उस पर एक सजेशन देना चाहूंगा और एक डायरेक्ट क्वेश्चन करना। जो फॉरेन एक्सचेंज की आपने बात की, you're absolutely right. That is the way to go forward. But we have got a problem. All the banks over here, they create so much hassle for people. Or unfortunately, they're waiting for weeks and weeks to receive the money in Pakistan. That is the reason people use Hawala, because it is timely, and there is of course a huge risk they are taking, and of course it is illegal. But we need to put our house in order before you launch that campaign, and I'm all for that campaign, and we should be persuading our friends that the money should be going through Pakistan and not through Hawala. That's one thing. The other issue is, which of course every Pakistani sitting here, when we look at the news and all that, yes, we are concerned what is happening vis-a-vis war against terror. And of course, the Western powers are very appreciative of the role Pakistan is playing. But unfortunately, they don't reciprocate the same level of commitment to Pakistan when it comes to supporting Pakistan. And can I take this opportunity to also raise the issue which we are very concerned about of this corruption which is coming on TV, and I'm sure that we are doing everything to eradicate it, and if it isn't true, then what are we doing to eradicate this so-called wrong impression which is being given? Please, Malik Sahab, could you kindly... Okay, first of all, आपकी जो suggestion है, the issues with the banks, I fully agree with you. इसके लिए President of Pakistan had taken the meeting with the Minister of Finance, और अब एक स्कीम ला रहे हैं जिसमें इंसेंटिव होगा फॉर दी पाकिस्तानी, ओवरसीज पाकिस्तानी टू सेंड द मनी। उसमें डिफरेंट किस्म के डिफरेंट लेवल पे हम इंसेंटिव्स देंगे इंशाल्लाह। हाँ, आई फुली एग्री विद यू कि जो कैंपेन हम कर रहे हैं, अच्छा, ये मैं जो कह रहा था ये लॉन्च हो चुका है। मेरा इसको थोड़ा पब्लिसाइज करने के लिए आई रिक्वेस्ट टू हिज एक्सलेंसी कि इसका एक कोई सेमिनार लॉन्च करें, और
इसमें जो ये है जो लॉन्च हुआ है प्रेसिडेंट साहब के हुक्म पे और प्राइम मिनिस्टर साहब की, ये क्योंकि मैं कैबिनेट का मेंबर हूं इसलिए मुझे पता था ये हुआ था। आई एम सो हैप्पी टू सी कि ये ऑलरेडी हो चुका है। तो सर जो आपने कहा है शायद आप अप्रिशिएट करेंगे कि वी आर लिटिल हेड ऑफ दैट, वी आर वर्किंग ऑन दैट। यस, बैंक्स की इश्यूज हैं, इसमें मैंने फाइनेंस मिनिस्टर को ये सजेशन दी थी कि रेमिटेंसेस की हद तक आप मुख्तलिफ जो बैंक्स हैं उनके साथ अपनी लेन कर लें, ताकि अगर कोई स्कॉटलैंड में है तो वहां से वो जो भेज सके, अगर कोई मैनचेस्टर बैठा हुआ किसी में तो वो लोकल बैंक के थ्रू भेज सके। दैट वी आर वर्किंग, अनलेस वी फैसिलिटेट इट आई नो इट्स डिफिकल्ट। पैसा भी मिलता है, जल्दी भी मिलता है और उसमें कवायतें भी कम होती हैं, तो उनको हम रिड्यूस कर रहे हैं। ये कंपेन जैसे अमानुल्लाह साहब ने कहा है, इसको एक परसेप्शन के तौर पे ना करें, इसको एज ए नेशनल पेट्रियोटिक सेंस के साथ करेंगे। नुकसान भी हो, तकलीफ भी हो, आप यही समझिए कि जैसा आपका एक स्पाई जो है मैदान जंग में लड़ रहा है बगैर बुलेट प्रूफ जैकेट के पहाड़ियों में, तो अगर आपको 10 कदम दूर जाना पड़े, सोचिए कि आप उसकी मदद कर रहे हैं। दिस इज इम्पोर्टेंट। जी जी, एक चीज आज। अच्छा, दूसरा अगला सवाल आपका था करप्शन पे। देखें, जितने भी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, इंडिया हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, श्रीलंका, इसमें करप्शन है और पाकिस्तान में यह नासूर 62 ईयर से है। जब तक सिस्टम को चेंज नहीं करेंगे, फ्री वे अकाउंटेबिलिटी एज इंडिकेटेड इन इब्न खलदून्स बुक अकॉर्डिंग टू इस्लामिक वे, उस वक्त तक शायद हम इस पे तरक्की न कर सके। लेकिन अब उसमें जो है लॉज जो हैं, अवेयरनेस आ गई है, लॉज जो उसको इन्हांस कर रहे हैं। और सबसे बड़ी वजह जो करप्शन की हमारे मुल्क में है वो है डॉक्यूमेंटेशन की। हमारे मुल्क में डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। आज भी आप पटवारी के पास जाते हैं, 20-40 हज़ार रुपया देते हैं। मैं एक इसका अभी तक भी वही कायम है वो कि प्रेसिडेंट अयूब थे तो अपने गाँव में गए, वही उनकी गाँव की औरत आई तो उसको काम था, तो प्रेसिडेंट ने ऑर्डर दिया, उसने कहा ये कर दो, डीसी ने कहा जी हो गया, कर लेते हैं। तो जो औरत है वो निकलने से पहले कहती है अयूब खां अल्लाह करे तू अल्लाह पटवारी बनवाए। तो ये हमारा कंसेप्ट है कि पब्लिक देखती है थानेदार की तरफ, तहसीलदार की तरफ, नायब तहसीलदार की तरफ, पटवारी की तरफ। तो उसको बेहतर करने के लिए अब ई फाइलिंग जो है, ई गवर्नमेंट लानी बहुत जरूरी है। तो इसलिए हमने ये अभी नादरा का देखें 96% हम ले हैं, बेहतर कर रहे हैं। अब यही चीज हम आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारा रेवेन्यू रिकॉर्ड है वो बेहतर हो जाए और उसको बेहतर बनाएंगे इंशाल्लाह हम। और बाकी अगर आपके पास कोई सजेशन है जरूर बताएं। मैंने कैंपेन खुद शुरू किया है। विद इन 4 months I've arrested 60 senior officers, grade 17 and above. And I have made sure that they go to justice. और इंशाल्लाह होगा। अब एक चीज शुरू की है, ये घुन की तरह लगी हुई थी पूरे मुल्क में, will need some time. And I assure you that कि अभी ये वार ऑन टेरर पे थोड़ी जान छूट जाए, हमारी काफी हद तक छूट गई है। तो इंशाल्लाह अगली हमारी वार जो होगी, वार ऑन करप्शन होगी इंशाल्लाह। जी साकिब राजा साहब, हुक्म। बरतानिया में आके आपका एमटीएम क़यादत से कोई राब्ता हुआ? कब जा रहे हैं खाना खाने? यार इस दफा देखिए, एक तो बात ये कि मेरी टोटल प्योरली ऑफिशियल विजिट है और मेरा इरादा है कि मैं मंडे तक रहूं। तो आज तो वैसे भी वीकेंड है, मंडे को फोन करूंगा इंशाल्लाह। The only Christian representative in this room, can I say? Oh sure, you're welcome. Please hold on. I don't want discrimination. We are all one. I have been standing the longest. Okay sir, please. And most people are aware of. I didn't know honest to God that you are that community, but my apologies if you're considering that. My questions are in particular. Sure. Okay. The first thing, obviously. Calm down. Let's relax. It's the responsibility of every nation to protect all its people. I'm sure we all agree here. Okay. And yet, I'm Mohsin Chowdhury from the British Pakistani Christian Association. Yet, despite the fact that 300 lawyers mobbed the court in Lahore when the Shazia Bashir case was taking place, not one of those legal professionals has been disbarred from the legal profession, yet you're saying we should put our trust in the courts. Now we have the case of Asia Bibi that has to be heard. What protection is going to be offered to Asia Bibi before that court case takes place? What protection are you going to afford to the judges that need to make a ruling here? We have heard from senior government officials that the crime of Asia Bibi being incarcerated
seems to be based on concocted evidence and on contrived data. And yet, she wasn't pardoned. The President had an opportunity to pardon. The pardon hasn't taken place. Okay? Now, because of that, the intensity, the volatility in that country has increased. And we've now seen two of the most progressive statesmen of Pakistan shot dead, assassinated, whilst under the protection of this government. Okay? What are you going to do to stop that happening? Is it surely not better to give her a pardon, risk her away in secret, and take her to a Western country so that we can reduce this volatility? Any court case is going to result in more death. And we don't even know if Asia Bibi is going to be your next high-profile casualty. Furthermore, just to complete this, we've talked about equality, we've talked about this new egalitarian in Pakistan. Yet I don't see any grassroots programs, and in particular, what about a focus on removing faith as a label from our passports? You're talking about your new NADA system. Take off the directive that requires Christian faith, Hindu faith, Sikh faith to be documented in a passport. That should have been removed centuries ago. And finally, just one last question. So, please, sorry about being aggressive, but I think let him speak. No, let him speak. Let him speak. I'll satisfy him. Don't worry. Please go ahead. Yeah. Police corruption. Until you pay a basic salary that is commensurate with the way that the police force is paid here in the UK, you are never going to see a police force that is willing and diligent enough to undertake these cases in safety. What you need to do now is pay them a decent wage and introduce a tax system which taxes every single citizen, not those that want to pay, taxes everybody, and that revenue should be used so that we don't have to keep going back to the UK for 665 billion last year, I think they gave. And the Americans have given a few billion. How can we allow this to happen? Why can't we tax some people? Introduce a system of government that looks after all of its people. The Pakistan flag has a white sash. That white sash at the beginning of the flag represents minorities. Introduced by Qadi Azam. I don't want to single out minorities. I think we're all equal citizens of Pakistan. We shouldn't be termed minorities. That sash has become red with the blood of martyrs, including Governor Taseer, who's not a minority, but spoke out for minorities. If you're going to make that sash white again, then you're going to have to start introducing schemes to manage your policing system, to introduce a tax system that enables you to protect your people, and something is going to be done to make sure the court system is viable and works. Thank you, Mr. Salam. First of all, I appreciate your feelings. An educated man is speaking in you. When did you last visit Pakistan? 2 years ago. 2 years ago. I would have gone last year, but the intensity of the violence is awful. I go every year. Oh. My wife is from Lahore. Let me tell you one thing. It's not the law. It's not what you are saying. It's a perception. And the perception which is built, that is based on media, discussions, and of course, different point of view from different parties, religious parties and all that. As far as Asia Bibi's case is concerned, it is still under trial. As far as my knowledge goes, there is no move so far for any pardon. Pardon can only take place if all the remedies, legal remedies, judicial remedies has been exhausted. Number one. I'm just trust me. I've registered every point what you said. I condemn those 300 liars. Liars and judges are supposed to give justice. They have to be like that. And I think that is a lesson that our liars should learn. That when some case is there, let the law take its own course. What happened when Governor Taseer's, the murderer, when he went to the court, what happened? That is right in front of you. This is the time where our nation needs a real evaluation. We are going through tough circumstances. And the problem is that people go for perceptions. And they go into perceptions so badly, they are motivated so badly, that results to this much. And actually,
It's not fair what has been done. Now, as far as the minority is concerned, I am on record in the National Assembly, just do away the word minority. Because when you say minority, that is discrimination. Nowhere in the world, whether there's a developed country or an undeveloped country, nobody likes discrimination. So I think what I propose, I hope I'll be able to pursue, the name of that ministry should also be changed, like Interfaith Harmony, which is the right name. And my dear Salam, if you see our own teaching in Islam, you are Ahle Kitab, where marriage is allowed. And according to Islam, even जो आपकी इबादत गाहें हैं या आपकी जो दर्स गाहें हैं, सबकी ड्यूटी बनती है मुसलमान को उसको हिफाजत करने की. ये कुरान कहता है, ये आपका रसूल कहता है. और अगर कोई हुकूमत भी हो इस्लामी, और अगर आपकी पनाह में कोई आ जाए, तो पनाह देना आपका फर्ज बनता है. तो दिस इज दी protection is the primary responsibility of the government of Pakistan, means the state of Pakistan. That's why you see the section 9 probably of the constitution, and also very famous verdict of Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, where he says that every minority, every religion has the right to practice its or her or his religion freely, independently, and without any obstruction. So we got to follow that. But I am with you, we are still uneducated. A country where लोगों को कहा जाता है तेरे कान ले गया, वो नहीं देखते मेरे कान साथ है, यकीन करें ये ऐसे होता है. And we got to educate our nation, and the prime role is of course of a media. जब हम हाइप देते हैं किसी चीज को, वो इतनी दे देते हैं कि उसको इससे पीछे लाना बड़ा मुश्किल होता है. I'll be grateful. I'll leave you my address. Whatever suggestion you have about taxes, please send it to us. I will definitely, with my recommendation, to send to the relevant quarters. As far as the police pays are concerned, since I've taken over, I have been able to get the pay doubled. But जब वो कहते हैं इंसान के दिमाग में रिश्वत कीड़ा पड़ जाए, तो 15,000 से 30,000 भी हो जाए, जब उसको 4 लाख 5 लाख सामने नजर आता तो वो नहीं छोड़ता. तो इसलिए you have to have a deterrent, and deterrent is accountability, and accountability across the board, and then you have to have stringent law. Unfortunately, in Pakistan we have the severity of law, but there is no certainty of law. You park your car here, you will get 50 pounds. He was a Tony Blair or the Prime Minister or anybody. But we have punishments in Pakistan, जिसका कल्चर ये है कि रेड सिग्नल क्रॉस करके कहते हैं ये बड़ा सिंबल है, वाह वाह क्या चोरी साहब सिग्नल क्रॉस कर गए. तो सर ये जरा आप देख लें कि ये अभी हमें थोड़ी काम की वो जो परसेप्शंस हैं वो चेंज करनी है. आप यहाँ बैठे हुए हैं, अगर आप भी गांव में होते तो शायद आप भी उनके साथ हड़ताल कर रहे होते. You have got change because of your education, your wisdom, your mind is open because of your education. I assure you, कोई मैं यकीन करें कि हम सारे यहाँ बैठे, कोई नहीं किसी को बेतदू शिया है सुन्नी है. I mean, it's not written on your face you are a Christian. You are as smart as they are. Rather, maybe you are smarter than many of us. So I couldn't make out. Your name is Salam, which is a Muslim name. Wilson, sorry. I didn't hear. Forgive me for that. So please, Wilson साहब, next time आएंगे फिर गप करेंगे इंशाल्लाह. Give me the suggestions, I'll take it. देखिए मैंने हर एक के सख्त और नरम सबके सवालों को जवाब दे रहा हूँ, because यही ब्यूटी है जमहूरियत की कि डिक्टेटर कहता ओके अच्छा सवाल किया तो घर वाले पूछो ना कितने जरा. We won't do that. I'll answer you. I'm accountable to you. And during this process, I'm learning. I'm taking something back home. For me to contribute in the cabinet, for me to contribute in my own ministry. तो इसलिए आप खुलकर जो भी सवाल करेंगे, I will very happy respond. और जहां मैं नालायकी से ना दे सकूं मैं सारी कह दूंगा.
Are you going to attack the feudal mafia, which has strangulated? अच्छा, अब अल्लाह साहब बड़ी होगी कर लेने दो प्लीज जरा। हाँ जी कौंसल साहबा, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट। ना प्लीज छोड़। और मानला साहब ठहरे, मानला साहब एक मिनट प्लीज। जी कौंसल साहबा प्लीज गो हेड। जी गो हेड प्लीज। जी बिल्कुल, प्लीज गो हेड। No man now. I'm with her now. All ladies now, please. Okay? Thank you. Please. जी दादा सर। One of the most devastating in the country, Ealing and my area where I live in Southwood, which is one of the most deprived road in the country. जी। Malik साहब आपसे मैं कुछ questions हैं, कुछ comments हैं, and I hope I've been very patient for half an hour, and I hope that you can take all my questions and concerns. आपने भी mention किया है कि you actually होम ऑफिस मिनिस्टर, और आप बात कर रहे थे जो हमारी asylum seeker immigration, because हमारे एरिया में immigration is one of the biggest problem. And over 2 decades, through my charity, I've been helping Pakistani community, right? Which all of my brothers do in this whole. उसमें क्वेश्चन आपसे मैं क्लैरिटी चाहती हूँ। आपने कहा कि हमने उससे कहा है कि अगर आप हमसे कोई ट्रैवल डॉक्यूमेंट या आइडेंटिफिकेशन जो आजकल वो मोदी चिट्ठी लिखता है कि आइडेंटिफाई करें वेदर इसका पाकिस्तानी और नो, तो आपने कहा कि हमारे पास नादरा की लिस्ट है 75 पीपल की, तो हम उनको वो इन्फॉर्मेशन रिलीज करेंगे। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि वो जो इन्फॉर्मेशन आप रिलीज करेंगे अंडर व्हाट सर्कमस्टेंस? आज ये टॉकिंग कि जो लोग हमारे किसी क्राइम में इन्वॉल्व हैं, या आप एक रेगुलर जो भी किसी को इन्फॉर्मेशन कहेंगे आप उनको देंगे? तो ये मुझे आभार में क्लियर कीजिएगा। एक का जवाब देता है जो तो बड़ा अच्छा होगा। मैं इतना लायक नहीं हूँ आपकी तरह, तो लेट मी गिव द आंसर्स वन बाय वन, और आप करते जाइए, मैं जवाब देता जाऊंगा। सबसे पहले तो लेट मी मेक वेरी क्लियर identification between asylum seekers and illegal immigration. So when I say asylum seeker whenever lands at the airport or lands somewhere, any other seaport, or enters the country by any other means, तो वो जाके अपनी political asylum claim करता है because of reason 1, 2, 3, उसका केस asylum के लिए रजिस्टर हो जाता है। कुछ illegal immigrant पकड़े जाते हैं कंटेनर में, बंद होते हैं, वो जब आ रहे होते हैं फ्रांस से या किसी शिप से आ रहे होते हैं तो वो पकड़े जाते हैं। जब उनसे सवाल करते हैं वो तो पॉलिटिकल असाइलम तो नहीं सीख करते, वो तो कहते हैं हम नौकरी के लिए आए हैं, तो उनका केस सेपरेट हो गया। पॉलिटिकल असाइलम में जो लोग हैं और जिनके क्लेम जो है सही नहीं हुए, एंड दे वर फाउंड टू बी ट्रेवलिंग ऑन फोर्ज्ड फेक फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट्स, तो उसके लिए भी हमने कहा है कि हम उनको नहीं लेंगे जब तक कि वो कोर्ट के प्रोसेस से गुजर नहीं जाते। अब वो लोग जो सारे कोर्ट के प्रोसेस से गुजर चुके हुए हैं, जिनके केसेस फाइनल अपील में रिजेक्ट हो चुके हैं, अब वो ये होता है कि पता नहीं है पाकिस्तानी है भी कि नहीं। आपको पता है अफगानी पासपोर्ट बड़ा खुला लोगों ने पाकिस्तानी पासपोर्ट लिया अफगानियों ने, और एक तो हाकिम वक्त उन्होंने ऑफिशियली दिए पासपोर्ट, जो भी आपको पता है। अब उस प्रोसेस में जाहिर है कि अगर कोई अफगानी क्लेम कर रहा अपने आप को पाकिस्तानी, तो ये हमारा राइट है कंफर्म करना कि ये पाकिस्तानी नहीं है। दूसरा, कुछ पाकिस्तानी हैं और इनकी हुकूमत नहीं मानती कि वो पाकिस्तानी हैं, तो एक एम्बिग्विटी आ गई। उस एम्बिग्विटी को हल करने का क्या हुआ? ये नहीं मैं कि उन बंदों की लिस्ट हमारे पास नहीं। मिसाल के तौर पे वो कहते हैं ये 15 बंदे हैं जिन्होंने एग्जॉस्ट कर लिए सारी लीगल रेमेडीज, और इनको हम भेजना चाहते हैं पाकिस्तान में। वो 6 महीने वैसे ही लग जाते हैं कि पाकिस्तानी हैं कि नहीं है। तो मैंने उन्हें यह कहा है कि जिन लोगों ने सारी की सारी लीगल रेमेडीज ले ली हैं, कोर्ट ने उनको ऑलरेडी एग्जॉस्ट करते हुए उनको नहीं इजाजत दी, अपील से भी फारिग हो गए हैं, उन लोगों के खुद खाता है मुझे कि हमारी जान छड़ाओ, हम सड़ रहे हैं यहाँ पे। अब क्या मसला उनका? उनकी वेरिफिकेशन नहीं हो रही, उनको ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहे, टिकट का बंदोबस्त कौन करे? तो ये ओनस मैंने लिया है कि वील डू इट। तो उसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई 100 बंदा या 200 बंदा जो क्लियर हो गया उधर से, तो उनकी लिस्ट हमारे पास आ जाएगी। हम उनको कंफर्म करेंगे अपने मेथड से, अपने प्रोसीजर से कि वाकई ये पाकिस्तानी है या है नहीं है। मिसाल के तौर पर उसके ID कार्ड है, उसका नाम है, 10-15 में से 2-4 का वेरीफाई कर लेंगे वाकई ये फलाने गांव का है कि नहीं है। तो बेसिकली ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि हम ऐसे गिव अप कर रहे हैं।
دیکھیں بائیلیٹرلی کچھ چیزیں آپ کو کرنی ہوتی ہیں. اگر آپ بھی میری جگہ ہوں گی یا امبیسڈر صاحب کی جگہ پہ ہوں گی تو آپ ویریفیکیشن تو کریں گی نا, آپ کے پاس آئے گا نام تو کیا کریں گے یہ پاکستانی ہے یا نہیں ہے. آپ بھائی وہ گیس ورک تو نہیں کہیں گے ہاں یہ اس نے شلوار پہنی ہے ایسی اور اس نے داڑھی رکھی ہے اور اس نے نہیں رکھی ہے, ہی از اے پاکستانی, ہی از ناٹ پاکستانی. نو, وی وانٹ ٹو بی ویری ویری پریگمیٹک اینڈ وی وانٹ ٹو انشور کہ کسی کے ساتھ انجسٹس نہ ہو. آج بھی بلکہ جو میں نے عرض کیا کہ میں نے کہا کہ وہ لوگ جو کرمنل نہیں ہیں اور وہاں کس طرح کے یہاں پہنچے ہیں تو ان کو کسی قسم کی جو ہے مینسٹری زور دینے کی کوشش کریں تاکہ وہ لوگ جو پاکستان سے یہاں آئے ہیں سہانے فیوچر کے لیے ان کو ہم تنگ نہ کر سکیں تاکہ ان کی مدد ہو سکے. آئی فلی اپریشیٹ یو بینگ اے کاؤنسلر دیئر, آپ کے پاس فیملی بھی آتی ہوں گی, لوگ بھی آتے ہوں گے, بٹ دی پرپز آف دی گورنمنٹ اینڈ آف کورس یور ایمبیسی از ٹو اسسٹ پاکستانیز ہے اینڈ وی شوڈ بی اے پارٹ آف سولوشن ناٹ اے پارٹ آف پرابلم فار پاکستانیز. مائی ڈیئر نیکسٹ جی ایک اور کر لیں پھر کیونکہ میری ایک اگلی میٹنگ تھی 5:30. اچھا اچھا کر لیجیے پھر. ہاں جی بالکل بالکل جی. مجھے ویسے امبیسڈر صاحب نے کہا تھا آدھا گھنٹہ آئے آپ ملے آ کے کمیونٹی کو, مجھے خوشی ہے میں بات کر رہا ہوں بٹ یہ ہے کہ آئی ایم دیئر. جی آئیے آئیے بالکل جی کیجیے کوشچن. جی یہ چار چیزیں ٹوگیدر ہیں. کرپشن کیوں ہوتی ہے؟ دیر آر رولس فار کرپشن. ٹھیک ہے, وہ رولس کون سے ہیں, وہ رولس ہم کیسے ایڈریس کر سکتے ہیں, کیسے نہیں کرنے چاہیے. آئی جسٹ گیو یو ایگزامپل, لوگوں کو پانی پینے کا نہیں ملتا ہے, جو بچوں کو ایجوکیشن نہیں ملتی ہے, ویری اسمال فیملیز ہیں جن کو 500 روپئے 1000 روز کا کماتے ہیں اور وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کیونکہ 4-5 اگر بچے کو اچھی ایجوکیشن دے سکیں یا ان بچوں کو آپ جو ہے وہ اچھی ہیلتھ فیسلٹیز دے سکیں تو وہ باتیں کو لوگ کیا کریں گے, وہ ڈیفینیٹلی وہ کرپشن کریں گے. سو میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ آپ برٹش پاکستانی کہ آپ ایشو کریں. دیز آر گراس روٹ ایشوز. اگر ہم یہ ایشوز ایڈریس کر لیں گے تو ہمیں نیشنل ایشو جو ہے ان کو ایڈریس کرنے میں پرابلم نہیں ہوگی. تو کرپشن کیوں ہوتی ہے, آپ کو سب بندہ ڈھونڈتا ہے اس کو کچھ نہیں ملتے, جائز طریقے سے ملتا ہے, جائز طریقے سے کرے گا. اگر کسی کا بچہ ہاسپٹل میں ماں ہے, بھائی ہے, وہ مر رہا ہے, اگر اس کو میڈیکل فیسلٹی نہیں ملے گی وہ وہاں سے چوری بھی کرے گا, ڈکیتی بھی ڈالے گا, جو بھی کرے گا. جیسے کہ آپ نے کہا کہ ٹیررزم بھی نہیں. کین آئی جسٹ گیو اے کمنٹ. آپ ایک منٹ جی, بیسیکلی میری بہن یہ آپ کا کوشچن تو نہیں, یو ہیو گیون می ایڈوائس. آئی ٹیک اٹ. Let me tell you, our government has taken a number of steps in this connection. First of all, we have done the devolution. From the Federation, we have given most of the subject to the provincial governments, so they can do at their own level. Red tapeism has been reduced, number one. We have taken the survey of poverty elevation. And you have seen that under Mohtarama Benazir Bhutto Shahid's income support program, every poor is getting rupees 1,000. Now we've given them a cellular phone and we are encouraging them to go through the documentation. Now, for example, if they go to utility store and if they use that money through that cellular phone, they get some bonuses on that. So what is important that those people who are not getting education, the children, what you're saying, we are giving them good care. Now, on the health side, we have given the health policy, and it is no more that era of 5 years back. Now, you see the people are being looked after. And I would like you to take just a tour from Pindi to or Pakhtunkhwa, Peshawar to Karachi. آپ کو یہ اس وقت میں آپ کو شیور کرواتا ہوں کہ آج میرے ملک میں کوئی بھوکا نہیں سوتا ہے. بیکاز دیر آر فیسلٹیز. بیت المال میں ہر جگہ جو غریب آدمی ہے, کسی کی شادی ہے, کسی کی بچے کی پڑھائی نہیں ہو رہی ہے, کسی کی فیس نہیں پے ہو رہی ہے, دیٹ آل از بینگ پیڈ. آپ جو آپ کی کٹی میں ہوتا ہے اس کے مطابق خرچ کرنا پڑتا ہے نا. جس ملک میں اتنے اربوں ڈالرز کے قرضے ہوں گے جو ہم نے تو نہیں لیے تھے, پیچھے سے آئے تھے, لیکن وہ ڈھول ہمارے گلے میں پڑا, ہم نے بجانا پڑے گا. بٹ وی ہیو اسپینڈ 3 years ٹو ریکٹیفائی the things. Now it's time for our deliverance. And I promise you, the way we have set up our roadmap, in coming year, you will see that how much progress we have made. Yes, mistakes ہمارے سے ہو سکتی ہیں, اور ایسے ہی سیشنز ہوتے ہیں, نیشنل اسمبلی میں بھی سیشن ہوتے ہیں, سینٹ میں بھی ہوتے ہیں, میڈیا بھی میری گت بور آتا ہے, ہر ایک کی گت لگتی ہے. But the question is, we all have to work to one goal, that is Pakistan, for the integrity of Pakistan,
because that's our future. That's the future of our generations. I'm really very impressed from Mr. Amanullah, the kind of zeal is shown. And we need everybody like Amanullah. Thank you very much.